Hello everyone. Today we will be discussing about the disease condition which is related to heart, and that is called as coronary artery disease. So let's see the definition. So it is the accumulation of plaque in the coronary artery. तो क्या होता है इसमें coronary artery में plaque का accumulation होगा. फिर this condition can occur in any artery of the body but has preference for the coronary artery. तो क्या होता है, ये कंडीशन कोई भी आर्टरी में हो सकता है, पर इसका सबसे बड़ा प्रेफरेंस क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी होती है जो हमारे हार्ट को जुड़ी हुई होती है. Coronary artery disease can also be described as a blood vessel disorder that is included in the general category of एथेरोस्क्लेरोसिस. तो क्या है, ये एक जनरल कैटेगरी में आता है जिसको हम बोलेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस. एंड कैड इज ऑल्सो नोन एज कार्डियोवैस्कुलर हार्ट डिजीज. तो क्या बोलेंगे हम इसको, कार्डियोवैस्कुलर हार्ट डिजीज में इसको क्लासिफाई करेंगे. देन इसका इटियोलॉजी देखेंगे किसकी वजह से होगा. एथेरोस्क्लेरोसिस द मेन कॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज. तो क्या है मेन कॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड्स प्राइमरी इन द इंटीमल वॉल ऑफ द आर्टरी. तो ये क्या होता है, डिपोजिशन होता है किसका, कोलेस्ट्रॉल और लिपिड फैट का डिपोजिशन होगा आर्टरी के इंटीमल वॉल में. देन रिस्क फैक्टर्स, कौन से रिस्क फैक्टर्स की वजह से हमको सीएडी हो सकता है. And factors that increase the risk of atherosclerosis include smoking, high blood pressure, diabetes mellitus, obesity, age and gender, family history and genetic and stress. Then इसका pathophysiology देखेंगे हम लोग. Atherosclerosis is the major cause of CAD, which is characterized by focal deposits of cholesterol and lipids in the intimal wall, as we have seen earlier. Then coronary artery atherosclerosis is a progressive disease that begins early in life. Then although several risk factors are present, endothelial injury is caused by inflammatory response in the intimal layer of the artery and the deposition of the lipids in the wall. क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा डिपोजिशन की वजह से. Then the process has been shown to occur in the 3 developmental stages. ठीक है, ये प्रोसीजर 3 developmental stages में क्लासिफाई हो जाएगा. फर्स्ट इज फैटी स्ट्रीक, सेकंड इज फाइब्रस प्लेक एंड थर्ड इज कॉम्प्लिकेटेड लीजन. Then fatty streak देखेंगे, early lesion of the atherosclerosis by lipid filled smooth muscle cell. Fatty streak can be observed in the coronary arteries by the age of 15 and progresses at patient ages. Then it is thought to be reversible. Then क्या होगा, fibrous plaque होगा. This develops over time. The smooth muscle cells stimulated by low density of lipoproteins and platelet activated growth factors proliferate, produce collagen and migrate over the fatty streak. तो क्या होता है इसमें, स्मूथ मसल सेल जो स्टिमुलेट होते हैं, तो क्या होता है उनका लिपोप्रोटीन्स एंड प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ग्रोथ फैक्टर से एक्टिवेट हो जाते हैं और कोलेजन प्रोड्यूस करते हैं. दिस फॉर्म्स अ फाइब्रस प्लेक. इसकी वजह से फाइब्रस प्लेक फॉर्म हो जाता है. देन इट में डेवलप इन वन पोर्शन ऑफ द आर्टरी और सर्कल द एंटायर लूमेन. फाइब्रस प्लेक कंट्रीब्यूट्स टू द लॉस ऑफ आर्टेरियल इलास्टिसिटी एंड इम्पेयर्स वेसल. क्या होता है, आर्टरीज की इलास्टिसिटी लॉस हो जाएगी इस फाइब्रस प्लेक के कारण. देन कॉम्प्लिकेटेड लीजन देखेंगे. दिस इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ द अल्सरेशन और रप्चर ऑफ प्लेक. Then platelet adhere to the lesions. Platelet adherence trigger the coagulation cascade with the development of thrombus that obstruct the artery. तो क्या होगा इसमें, प्लेटलेट में थ्रोम्बस बन जाएगा और एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा. Then we see the clinical manifestation. क्या होता है इसमें, एंजाइना पेक्टोरस होगा. Then acute coronary syndrome होगा. डिजीनेस होगा, पेशेंट को डिस्निया फील होगा, एंजाइटी, नॉजिया एंड वॉमिटिंग, टैकीकार्डिया एंड डिसरिथमिया. देन डायग्नोस्टिक स्टडीज देखेंगे इसकी क्या क्या है. चेस्ट एक्सरे करेंगे सबसे पहले और कार्डियक एंगेजमेंट. देन एओर्टिक कैल्सिफिकेशन एंड पल्मोनरी कंजेशन चेक करेंगे. देन ईसीजी लेंगे एंड लैब टेस्ट फॉर लिपिड प्रोफाइल. देन इसका मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हमको एडमिनिस्टर क्या करना है, डिगॉक्सिन करना है. इंट्रावेनसली डिजिटलाइज्ड डोज इज 0.6 to 1 mg. 50% of the dose initially. Additional fractions are given at 4 to 8 hour intervals. Then aspirin administer करना है per oral 325 to 650 mg per day. Then administer prednisolone 5 mg and hydrocortisone 20 mg. Then इसका नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे हम लोग. फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ हिस्ट्री लेंगे पेशेंट का, असेस फॉर द चेस्ट पेन. देन precipitating factors देखेंगे, एक्सरसाइज, स्ट्रेस एंड स्मोकिंग. Then measure attempted to control pain, for example lying down, eating and drinking and using of antacids. Then assess for the 3 symptoms, that is digestion, heartburn, nausea and abdominal pain.
देन असेस फॉर द रिस्क फैक्टर्स, क्या करेंगे, रिस्क फैक्टर्स को असेस करेंगे, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, लिपिड प्रोफाइल, टोबैको यूज, स्ट्रेस लेवल एंड एक्सरसाइज पैटर्न देखेंगे पेशेंट का। देन फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या क्या देखेंगे, पेशेंट का पोस्चर असेस करेंगे, पोस्चर इंडिकेटिंग चेस्ट पेन, एग्जाम्पल रबिंग चेस्ट और लीनिंग फॉरवर्ड। देन चेंजेस इन वाइटल साइन में कोई चेंजेस अगर देखेंगे, टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। देन डिस्निया, क्रैकल्स एंड डिस्ट्रिथमिया। देन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करेंगे पेशेंट का, वॉमिटिंग, डिक्लाइन इन यूरिन आउटपुट। देन नर्सिंग डायग्नोसिस कौन सा आएगा, ऑल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू इम्बैलेंस बिटवीन मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड एज एविडेंस बाय एन इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट। Then altered comfort related to inflammatory process of the arteries as evidenced by patient rubbing the chest. Then activity intolerance, anxiety related to unknown outcome. Then हम patient को education कैसे देंगे, family education कैसे देंगे, and provide specific verbal and written instruction on smoking cessation, stress management and diet modification. Then encourage adherence to a diet low in saturated fat and cholesterol. Discuss benefits of stress management techniques in decreasing negative efforts on oxygen demand. देन कॉम्प्लिकेशन दिखेंगे, कोरोनरी आर्टरी के हार्ट फेलियर हो सकता है, डिस्रिथमिया, पेरिकार्डाइटिस दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम। देन अदर कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड कार्डियोजेनिक शॉक एंड इस्चेमिक cardiomyopathy. Then in summary we will see coronary artery disease is caused by accumulation of cholesterol and lipids as we've seen earlier. The developmental stages are fatty streak, fibrous plaque and complicated lesion, diet which is high in lipids and cholesterol increased susceptibility. So I hope you have understood about the coronary artery disease. Now you have to wait till my next lecture comes. Till then keep watching and keep learning. Thank you and goodbye.